Hello everyone, welcome to our YouTube platform Concept and Fact of Life Sciences. Today in this video, we are going to discuss about the evolution of stele. Stele, as we all know that the central part of stem and root, they contains the tissues derived from the procambium. In most of the cases, they have xylem and phloem tissues. In some cases, they also have pith and pericycle. इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे. So start करते हैं how this stele it was evolved. So we start with the Stelar theory. क्या थी Stelar theory? बात करते हैं. It was given by one Tieghem and Douliot in year 1886. According to this theory, the stem and the root, they have two basic structures. One is the outer cortex, while other is the central cylinder that is made up of vascular tissues. Simply we can say that if we take the section of root or the stem, they have outer cortex, while the central part, it is made up of the vascular tissues that is called as a central cylinder. So we can say that the main, or we can say the roots and the stems, they have two basic structure. One is outer cortex and other is the central cylinder as per the Stelar theory. Now next thing is the type of stele. In year 1982, Schmidt, he recognized two principal or prominent type of steles in plants. They classified them into the primitive protostele and more advanced siphonostele. तो आगे अपन बात करेंगे कि प्रोटोस्टील की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और साइफोनोस्टील में ये किस प्रकार से इवॉल्व हुई है. तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रोटोस्टील के साथ में. सो प्रोटोस्टील, as we already stated that it is the most primitive type of stellar system. It is non-modulated. Non-modulated means they do not have a central pith or central tissue, medullary tissues. That's why they are non-modulated and known as protostele. There is a presence of single or multiple layers of pericycle around the phloem, which in turn remains surrounded by the endodermis. So it is the basic structure of protostele where there is absence of medullated tissues or pith. There is a presence of single or multiple layers of pericycle and which in turn remains surrounded by the endodermis. Now the protostele, they can be further classified into four types, or we can observe four types of protosteles in case of plants. One is known as the haplostele. Now this haplostele, they have central ring of xylem, which in turn remains surrounded by the phloem, and the outer side of the phloem we are having the pericycle, as we already stated, which in turn remains surrounded by the endodermis. So this is the structure of haplostele, which is found in case of Rhynia, Xylotum and Selegenella. Next type of protostele, it is the actinostele. Here we can observe the presence of a star-shaped xylem. यहाँ पे जो xylem है वो आपको एक स्टार शेप में देखने को मिलेगा, which is having arms, extended arms, which can extend towards the ridges of phloem. So this type, if you observe this type of structure, this is known as the actinostele. Now this structure again, it is having the pericycle and the endodermis. This type of structure is found in case of Lycopodium serratum as well as in case of Astroxylon. Next type of protostele is the Plectostele. Here we can observe the alternative stands of xylem, or we can say there is a interconnected plates of xylem and phloem. Okay. Again, there is a presence of pericycle and the endodermis.
This type of structure or this type of stele, it is found in case of Lycopodium clavatum. Next is the mixed protostele, where you can observe the scattered bundles of xylem into the phloem. There is a presence of xylem bundles in the phloem, and this type of structure, it is found in case of Lycopodium sernum and the osmundum. So this is all about the protostele, where we are not having any type of modulation or the pith. Next, it is the siphonostele. Now, the basic difference between the protostele and the siphonostele, it is the presence of pith. Like we can say that the protostele, as we already stated, that it is a primitive type. So, a protostele, it is enough to meet the requirement of smaller plants. But as the height of the plant it increases, the protostele, it is not enough to meet the requirement of these larger stems. So there is a evolution of siphonostele. What is the difference between the proto and siphono? As we already stated, there is a certain internal modification and there is a presence of a definite parenchymatous pith in the central of protostele. So simply, if there is a presence of pith in the center of protostele, it is now known as the siphonostele. जैसा अपन पढ़ चुके हैं, बाहर आपके कॉर्टिकल रीजन है, देन देयर इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर आपका पेरिसिकल और पेरिसिकल के अंदर आपके वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम. नाउ अगर यहां पे प्रेजेंस है एक पित्त की और मेडुलेटेड टिश्यूज की, देन this stele, it is now known as the siphonostele. Simply, Jeffrey in year 1910 recognized two prominent types of siphonostele. One he named as cladosiphonic, while the other is phlocyphonic. What is the difference between the clado and the phlocyphonic? बात करते हैं. In case of the stems, we are having the stelar system. If there is a supply of vascular tissues towards the leaf from the stem, then it creates some gaps in the vascular tissues or vascular bundles or stele of the stem. So these leaf supplies, they create some gaps in the stem stele, and these are known as the leaf gaps or traces. Simply, so if there is a presence, if there is an absence of these leaf gaps, then these are called as the cladosiphonic, found in case of microphilous lycopsids like Selaginella. Other variant is the phlocyphonic. Simply, if there is a presence of the leaf gaps, they are called as the phlocyphonic, found in case of some advanced pteridophytes like ferns. ठीक है, तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया. यहाँ पे siphonostele, Jeffrey ने 2 टाइप्स के रिकॉग्नाइज किए. वन इज द क्लेडो, where there is the absence of leaf caps, and other is known as the phylocyphonic, where there is a presence of leaf caps. Now, next, the cladosiphonic, they can be of 2 types. One is known as the ectofloic, while the other is called as the amphifloic. As we all know that these clado and phylocyphonic, these are the variant of siphonostele. Sorry, these are the variant of siphonostele. So they are having a definite parenchymatous pith in the center. In both condition, ectofloic and amphifloic. Now, in case of ectofloic, you are having the phloem towards outer side of the xylem. Simply. That's why it is called as ectofloic. While in case of amphifloic condition, you are having phloem towards inner as well as towards outer side of the xylem. So amphi condition is there. We are having phloem on both sides of xylem. That's why it is called as the amphifloic condition. The ectofloic condition, it is found in case of equisetum as well as in case of osmunda,
while the amphifloic condition it is observed in case of Adiantum, Bryopteris and Marsilia. So this is the cladosyphonic variants. Next बात करें, we are having the philosyphonic condition. Simply difference क्या था क्लेडो और फिलो में? क्लेडो के अंदर लीफ गैप्स थे नहीं, यहाँ पे लीफ गैप्स रहेंगे. अब फिलोसाइफोनिक्स के भी कुछ वेरिएंट्स आपको देखने को मिलती है. फर्स्ट इज नोन एज द सोलेनोस्टील. सिंपली वी कैन से द साइफोनोस्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स. सिंपली if the leaf gaps they are non overlapping then it is called as the solenostele. लीफ गैप्स की बात करें तो अपन यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं लीफ गैप्स को. ये सिंपली आपकी वही कंडीशन है जो आपको क्लेडोसाइफोनिक में देखने को मिल रही थी. सो यहां पे अपन इसको लीफ गैप्स क्रिएट कर लेते हैं. So if you observe this type of condition where you are having the leaf gaps in the cladosyphonic condition, there should be a presence of pith, but if the leaf gaps are absent, it is known as cladosyphonic. If there is a presence of non-overlapping, आगे और वेरिएंट पड़ेंगे जिसमें overlapping leaf gaps आएंगे. If there is a presence of non-overlapping leaf gaps, it is called as solenostele. Solenostele, they are of two types again, ectofloic, amphifloic. कंडीशन सेम रहेगी. यहाँ पे जो फ्लोएम है आउटसाइड द जाइलम है और यहाँ पे जो फ्लोएम है बोथ साइड ऑफ द जाइलम है, इसलिए इसको अपन एम्फीफ्लोइक कह रहे हैं. ये कंडीशन आपको अगर बात करें एक्टोफ्लोइक तो देखने को मिलेगी ऑस्मुला के अंदर और एम्फीफ्लोइक कंडीशन देखने को मिलेगी आपको एडिएंटम पीडेटम के अंदर. तो ये हो गया आपका सोलेनोस्टील वेयर यू कैन ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग लीफ कैप्स. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट है अपने पास में कंडीशन फिलोसाइफोनिक है, but we are having two variants. One is the dictyostele, other is the polycyclic stele. Now, if we talk about the dictyostele, simply we can say siphonostele with overlapping leaf caps. वहां आप लीफ कैप ओवरलैप नहीं कर रहे थे, सिंगल लीफ कैप आपको देखने को मिल रहा था. यहाँ पे ओवरलैपिंग लीफ कैप्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, then this type of stele it is known as the dictyostele. So there is a presence of overlapping leaf caps which differentiate the dictyostele from the solenostele. Now this type of dictyostele it is found in case of pteris as well as in case of ophioglossum. Here there is a presence of meristeles. We are having meristele. Meristele means you have distinct bundles of phloem and xylem which in turn remains surrounded by the endodermis. So the meristem, so we can say the dictyostele they are having the meristems which remain arranged around the central pith. तो पिथ तो रहेगा क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि ये कंडीशन क्या है. साइफोनोस्टील आप पढ़ रहे हैं तो पिथ की प्रेजेंस यहाँ पे रहेगी. पिथ के अराउंड आपको ओवरलैपिंग लीफ कैप्स देखने को मिल रहे हैं and we are having the meristele. So it is known as the dictyostele found in case of pteris and the ophioglossum. Next condition is the polycyclic stele. Again we are having the meristeles but they are arranged in more than one ring. Then it is called as the polycyclic stele. इसकी अगर बात करें तो टू रिंग्स अपने को देखने को मिलती हैं. वेरिएशंस हैं इसके अंदर भी. टेरिडियम एक्विलाइनम के अंदर दो रिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जैसा अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम के अंदर. थ्री रिंग्स अगर आपको देखने को मिल रही है, ये फाउंड होती है इन केस ऑफ मॉर्टेनिया पैक्टिनाटा. यहां आपको जो वेस्कुलर बंडल्स हैं मेरिस्टील्स हैं आपको तीन रिंग के अंदर देखने को मिलेंगी. फोर रिंग ऑब्जर्व होती है इन केस ऑफ टेरिस पोडोफाइलम. सो यहां पे भी आपको अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं. ये एग्जांपल्स अपने को याद रखने हैं, क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट इससे एडवांस जो आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ डाइकॉट दैट इज यू स्टील. यू स्टील में क्या होता है, सिंपल सा डिफरेंस है, पिथ वहां पे भी रहेगा. सो यू आर हैविंग द सेंट्रल पिथ, यू आर हैविंग द वैस्कुलर बंडल्स. वैस्कुलर बंडल्स भी आपके
इसी तरीके से अरेंज रहेंगे अराउंड द पिथ, देन यू आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम that is essential for the secondary growth. If there is a presence of cambium, we can say between the xylem and phloem, then this type of stele it is called as the most advanced stele, which is known as Eustele. एक क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली आपके 2022 के अंदर आरपीएससी हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था सी स्टीलर सिस्टम के, उसमें क्वेश्चन भी ले लेते हैं अपन. In pteridophytes, the overlapping of leaf caps in a solenostele leads to the formation of. Simply, we are having, he is stating that the overlapping of leaf caps in solenostele. Solenostele में अगर leaf caps की overlapping होती है तो क्या बनेगा? तो अभी अपन ने देखा नॉन ओवरलैपिंग है सोलेनोस्टील. अगर ओवरलैपिंग हो जाती है तो क्या मिलता है? डिक्टिव स्टील कंडीशन देखने को मिलती है. तो ऑप्शन के अंदर अपन देख लेते हैं, डिक्टिव स्टील है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. लास्ट में अपन एक देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील. किस तरीके से जो प्रोटोस्टील है वो मेड्यूलेटेड साइफोनोस्टील के अंदर कन्वर्ट हुई. इसके लिए अपन कह सकते हैं कि दो थ्योरीज अवेलेबल है. सिंपली हाउ द मेड्यूलेशन ऑफ प्रोटोस्टील अकर्ड. एक थ्योरी है जिसे कहते हैं इंट्रास्टीलर थ्योरी, यानी कि उसका डेवलपमेंट स्टील के अंदर से ही हुआ है. दूसरा है एक्स्ट्रा स्टीलर थ्योरी. इंट्रास्टीलर थ्योरी वुडल और फाहन ने दी थी, एक्स्ट्रा स्टीलर थ्योरी दी थी, इट वाज गिवन बाय जेफरी. सो इंट्रास्टीलर थ्योरी क्या कहती है? सिंपली ये कहती है कि जो आपका ट्रैकरी एलिमेंट्स थे जाइलम के, उन्होंने ही आगे जाकर के क्या फॉर्म कर दिया? पिथ का फॉर्मेशन कर दिया. सो देयर इज ए conversion of trachy element of central xylem into the parenchymatous tissue that lead to the formation of siphonostele or that created the pith in the protostele. ठीक है, तो जो आपका पिथ है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? एज पर द इंट्रास्टीलर थ्योरी फ्रॉम द ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ सेंट्रल xylem. वही अगर बात करें एक्स्ट्रास्टीलर थ्योरी की, तो ये थ्योरी कुछ अलग बताती है. ये कहती है कि आउटर रीजन, जैसा अपन ने कहा, कहलाता है कॉर्टेक्स. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो लीफ गैप्स क्रिएट हुए, उन लीफ गैप्स के थ्रू देयर इज ए माइग्रेशन ऑफ सेल्स ऑफ कॉर्टिकल टिश्यूज. देयर इज ए माइग्रेशन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स इनटू द स्टील थ्रू द लीफ गैप्स दैट क्रिएटेड द पिथ. So this is the basic difference between the two hypotheses. So this is all about the evolution of steel. Thank you.